सर ज्यादा नहीं तो लीव कर दिया। हैं? कोई बात नहीं। चले, खैर नहीं चल रहा तो खुद फिर कभी मिलते हैं। नहीं, डिस्कशन तो आज अच्छी खासी हो गई है। न्यूटन हो गया, yes, I have to discuss one method that I leave for students to explore themselves. Self-study assignment. अच्छा, ये जो सेल्फ स्टडी असाइनमेंट है, इसमें आपने कुछ सबमिट नहीं करना। आपने इस आर्टिकल को पढ़ना है और समझना है, और इसके जरिए आपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। तो हाउ आई विल ग्रेड, आप ये पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए मैं आपको पढ़ने और समझने के लिए आपको नेक्स्ट मंडे तक का टाइम दे रहा हूँ, और नेक्स्ट मंडे को से पहले पहले मैं 2 सवाल 3 सवाल आपको दूंगा, और आपने ये जो मेथड पढ़ के समझ लिया है, इस मेथड को इस्तेमाल करके आपको वो 2-3 सवाल सॉल्व करने होंगे जो मैं आपको दूंगा, LMS पे अपलोड कर दूंगा एज असाइनमेंट, और वहाँ भी स्टेट कर दूंगा कि इसको आपने मेथड ऑफ पोलिनोमियल्स के जरिए, जिसको मैंने अपनी फाइल को हेडिंग दी हुई है हॉर्नर्स मेथड। तो कुछ किताबों में ये हॉर्नर्स मेथड कहलाता है, कुछ किताबों में न्यूटन मेथड फॉर पोलिनोमियल कहलाता है। इसमें बुनियादी चीज़ ये है कि अगर आप, जैसे ये इक्वेशन है, लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ यू, जैसे मैं किताब की इमेज है, ये इक्वेशन है x³ + x² - 3x - 3 = 0, और इसका एक रूट x = √3 है। हम x = 2 अज्यूम कर लेते हैं रूट इसका, क्योंकि √3 = 1.7 समथिंग, तो हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए x = 2। इसमें करते ये है कि अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस याद है, तो इक्वेशन पोलिनोमियल के कोफिशिएंट उठाते हैं आप 1 1 -3 -3, और x = 2 से सिंथेटिकली डिवाइड करते हैं। जब आप सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे रिमाइंडर आता है, और रिमाइंडर जो है वो फंक्शन वैल्यू होती है। यानी अगर x के इस फंक्शन के अंदर मैं x = 2 रख दूं तो 3 आएगा, और ये जो रिमाइंडर है इसको छोड़ दीजिए। अब ये 1 3 3 जब आपने x - 2 से डिवाइड कर दिया, तो अब पोलिनोमियल आ गया x² + 3x + 3। इसको फिर अगर x = 2 से सिंथेटिकली डिवाइड कर दें, तो अब जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी डेरिवेटिव वैल्यू। अब फंक्शन वैल्यू भी आ गई, डेरिवेटिव वैल्यू भी आ गई, एंड यू कैन गो थ्रू वन स्टेप ऑफ न्यूटन, 2 - f2 / f'2, नई अप्रोक्सीमेशन आ गई। उस नई अप्रोक्सीमेशन के जरिए फिर से आप सिंथेटिक डिवीजन कीजिए। फर्स्ट सिंथेटिक डिवीजन विल गिव यू फंक्शन वैल्यू, सेकंड सिंथेटिक डिवीजन विल गिव यू, लो समझा दो दिया मैंने सारा का सारा। तो जो पिछले प्रोसेस से आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई, उससे आपने फिर उसी पोलिनोमियल को डिवाइड किया। फर्स्ट रिमाइंडर इज द फंक्शन वैल्यू, सेकंड रिमाइंडर इज द डेरिवेटिव वैल्यू, एंड x - fx / f'(x) से नई अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। एंड इस प्रोसेस को अगर आप बढ़ाते चले जाएं, तो यू विल सी दैट you will converge to the value of √3. Fourth value is correct to 5 decimal places. To observe the improvement in the accuracy, you can see. So you study it yourself, and इसका एल्गोरिथम भी बड़ा मजे का है। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट should enjoy doing that,
कि एल्गोरिथम कैसे डेवलप हो रहा है, और अगर उन्होंने सिंथेटिक डिवीजन का कभी एल्गोरिथम बनाया था तो यकीनन वो सिंथेटिक डिवीजन के एल्गोरिथम को समझ सकते हैं। तो इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैंने तो कहा था कि आप खुद पढ़िएगा। मैंने और तकरीबन मैनुअल प्रोसेस तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, एंड यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग पोलिनोमियल इक्वेशन यूजिंग दिस। लेट मी स्विच टू सम एक क्वेरी आई थी मेरे पास, इन विच द स्टूडेंट आस्क के भाई अगर कई रूट हो तो क्या करें। तो मैंने कहा था कि मल्टीपल रूट्स के लिए हम बाद में बात करेंगे। सो ना मैं ज़रा जो अननेसेसरी फाइल्स मेरे पास खुली हुई हैं जिसकी वजह से मेरा कंप्यूटर स्लो हो जाता है, मेरा लैपटॉप पुराना हो गया काफ़ी। I want to open a new file and the QD algorithm. I hope you are able to see this heading QD algorithm in the new Word file that I have just opened. Can you? Hello. Yes, sir. Okay. This QD algorithm is particularly made for solving polynomial equations. We know that a second degree polynomial has at the most 2 roots. Third degree polynomial equation has at most 3 roots. 10th degree polynomial equation has at most 10 roots. So हो सकता है कि कुछ रूट रिपीटेड हो, बट अगर डिस्टिंक्ट है तो 10 डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन के 10 रूट होंगे, उनमें से कुछ रियल हो सकते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। So now, usually I write down polynomial as this and a polynomial equation is this. In between there is a method, Beershov method, जो कि जिसके बारे में next time आपको briefing दूंगा, and that is for self study assignment. उसमें हम quadratic factors बनाते हैं। Horner's method में हम सिंथेटिक डिवीजन के जरिए पोलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मगर ये जो QD एल्गोरिथम है, इसमें हम सारे के सारे रूट्स इकट्ठे निकालते हैं। We can say that all previous method, including Horner's method, एक वक्त में एक ही रूट निकालता है। मैंने यहाँ बेयरस्टोव मेथड का जिक्र किया जो क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालता है। क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालने का मतलब है कि एक वक्त में 2 रूट निकालता है, क्योंकि जब क्वाड्रेटिक फैक्टर आपके पास आ गया तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आप दोनों रूट्स निकाल सकते हैं। QD एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम है जो सिर्फ पोलिनोमियल इक्वेशंस के लिए सारे के सारे रूट्स को इकट्ठा निकालता है, और इतनी मेहनत करने की वजह से ये मेथड बहुत स्लो है, बट वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। यूजुअली वी राइट डाउन पोलिनोमियल इक्वेशन एज दिस। x पावर n के साथ जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम a सब n कहते हैं। x पावर n माइनस 1 की टर्म के साथ जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसको हम a n माइनस 1 कहते हैं। x स्क्वायर की टर्म के साथ जो कोफिशिएंट आता है उसको a2 लिखते हैं, x पावर 1 के साथ a1 और x पावर 0 के साथ a0। मगर जब हम QD एल्गोरिथम कर रहे हैं तो ये इसकी हमारी उलट जाती है। इसका मतलब है लार्जेस्ट डिग्री टर्म के साथ a0, उसके बाद a1, a2 और कांस्टेंट टर्म an है, वेयरएज यूजुअल वे में कांस्टेंट टर्म a0 लिखी जाती है। तो फर्स्ट change from conventional things is this. Now what we do,
we develop a table of results. इस टेबल ऑफ रिजल्ट्स में हम पहले हेडिंग डालते हैं टू नेम कॉलम्स जो हम कैलकुलेट करेंगे. First column will be headed as E super 0 and the last column will be headed as E super n. The next column Q0, the next column E1, the next column Q1, the next E1. So alternately columns of E's and Q's हैं. ये जो लेबलिंग है Q's जो है वो क्वोशंट्स के लिए हैं और E's जो हैं वो डिफरेंसेस के लिए हैं. हम डी नहीं इस्तेमाल करते, ई इस्तेमाल करते हैं. कैसे? कोई भी हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन दी भी है तो सबसे पहले एक वैल्यू इन एवरी कॉलम ऑफ क्यू लिखी जाएगी. फर्स्ट कॉलम ऑफ क्यू में जो वैल्यू आएगी माइनस a1 अपॉन a0, माइनस ऑफ दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर. E1 के पहली रो में कुछ नहीं आएगा. Q1 की वैल्यू यानी कॉलम्स ऑफ क्यूज में पहली रो जो है उसमें पहला नंबर माइनस a1 अपॉन a0 है, बाकी सारे नंबर जीरो हैं. Whereas in the first values in the columns of E's that we write a little below the values of Q's in the first row, तो E1 की पहली वैल्यू A2 अपॉन A1 आएगी, फिर A3 अपॉन A2 आएगी, फिर A4 अपॉन A4 अपॉन A3 and so on. Last but one value of E is an divided by an minus 1, this divided by this. First and last value in every row of E, yeah, first and last column of E will always contain 0. Now, that means we are going to develop a matrix of results. First a row of Q, then a row of E, then a row of Q, then row of E, then row of Q, then row of E. Now, each row of Q is developed using this formula. We can say the value of E to the right minus the value of E to the left plus the value of Q above. Whereas value of E is value of Q to the right, value of Q to the left into value of the Q above. And let us see what happens when we apply this algorithm. It will be best if I demonstrate the use of this not in this pre-calculated table, but going to Excel sheet and demonstrate you the whole method there. So can you see the Excel sheet? Yes, sir. मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी E, तो E0, Q0, E1, Q1, E2, Q2, E3, Q3, E4. कितने बनेंगे कॉलम?
डिपेंड्स ऑन कितने डिग्री की इक्वेशन है। 4 डिग्री इक्वेशन है, 4 रूट्स आएंगे। 4 रूट्स आने का मतलब है 4 कॉलम्स होंगे क्यू के और 5 कॉलम्स होंगे ई के। क्यू की पहली वैल्यू कैलकुलेट करनी है इज इक्वल टू माइनस ये वैल्यू डिवाइडेड बाई ये वैल्यू। So minus of minus 256 divided by 128। इसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज ऑफ क्यू जो हैं वो जीरो होनी है। एंड देन आई गो टू मेक अ कॉलम ऑफ रो ऑफ ई। पहली वैल्यू ई की और लास्ट वैल्यू ई की विल बी जीरो। ई की पहली रो जो है दैट इज कैलकुलेटेड यूजिंग व्हाट, this number divided by this number, coefficient of x square divided by coefficient of x cube. So I write down this as minus of the formula जो है वो है coefficient of x square divided by coefficient of x cube. तो फॉर्मूले को इंटैक्ट रखने के लिए मैंने ये किया, वरना मैथमेटिकली इसकी जरूरत नहीं थी। Then what is E2? अगला कोफिशिएंट is equal to minus 32 divided by 160 यानी माइनस एक्स का कोफिशिएंट माइनस डिवाइडेड बाई 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगली आई टी की वैल्यू कांस्टेंट डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई माइनस 32। Now let us see how we have to develop a row of Q. Q की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने करनी है इज इक्वल टू राइट वैल्यू ऑफ ई यानी डी 35 माइनस लेफ्ट वैल्यू ऑफ ई यानी बी 35 प्लस previous value of Q, that is C34. So value of Q is calculated. The same formula replaced here, here, and here. See what's this? This is this value minus this value plus this value. What is this? Value of E on the right, value of E on the left, plus previous Q value. Once we have done that, we have to produce the next value of E. इस कॉलम में हमें हमेशा E की वैल्यू 0 चाहिए, लिहाजा मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ फ्रॉम B35 और यहाँ पे 0 को कॉपी कर रहा हूँ J35। Now how to get the value of E here? I have to take the ratio of right Q and left Q. So right Q is Q1, which is in the cell E35, no, 36 divided by C36 and multiplied by previous value of E, which is D35. एंड इस फॉर्मूले को मैं ई के कॉलम में हर जगह पेस्ट कर देता हूँ। Now look at this. What is this? Right value of Q divided by left value of Q multiplied by the previous value of E. So what is the next number? Right value of Q divided by left value of Q multiplied by upper value or last value of E. The same is case with it. अब हमने एक रो ऑफ Q और एक रो ऑफ E इनमें फॉर्मूले भर दिए हैं, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट
paste, paste, paste. Now let me show you a pattern. E के जो middle three columns हैं, they are coming closer and closer to 0. If you observe that these are coming closer and closer to 0, that means the Q values are going closer and closer to the 4 roots of the equation. So that is it about QD algorithm. I'll consider this and the Horner's method again next time, along with Bierstove method. And now I finally terminate the session.